I have created a new channel especially and dedicated to the researchers. If you are a researcher, this is the best place to find out each and every stuff regarding your research, like the paper publication and everything. Now how we will search it? So just open YouTube and click and write type the researchers adda and then enter. So you will get here, this is the researchers adda, this is the first link. So subscribe if you are new and explore this channel. Also go to the researchers adda. So here you will get all kind of the video related to the research and all the stuffs you will get here on daily basis, regular 8 a.m. morning. सो 8 AM मॉर्निंग पर आपको सारे वीडियो मिलने वाले रिलेटेड टू द रिसर्च. सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो. सो डोंट मिस एनी अपकमिंग वीडियो. वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो you will find here. Hello friends, welcome back. Thank you so much for your motivation and love. So in this series video we will discuss about the UGC approved journal. UGC approved journal के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है आज का. तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको अपना रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी. लाइक द मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी, देयर आर द सो मैनी थिंग्स वी विल कवर्ड इन दिस जर्नल. सो लास्ट तक वीडियो आप ज़रूर देखें. अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, please hit on the subscribe button and so you will not miss our upcoming new video. So we will upload and we are uploading on daily basis, regular 8 AM morning. So आपको daily basis पर morning में video मिलेंगे. So let's move to the site. So this is the first site, Indus Science Publishers, and this is UGC approved journal and multidisciplinary journal. The title name is the International Journal of Applied Pattern Recognition, and the publication time 4 issues per year. So your research paper will get published within 3 months. So this is the rapid publication journal and reputed. बहुत अच्छा रिनाउंड प्लेटफॉर्म है. इंडस साइंस बहुत रिनाउंड प्लेटफॉर्म है और क्विकली पब्लिश कर सकते हैं अपना रिसर्च पेपर. एंड कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो इसमें आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं. सो दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द टॉपिक्स कवर्ड बाय दिस जर्नल, लाइक face recognition analysis, speech recognition, natural language, image recognition, geographic application, NLP. So there are these type of the categories we can publish our research paper in this type. अगर आपका research area और research topic अगर इन सभी टॉपिक से मैच करता है तो दिस इज द बेस्ट सुटेबल जर्नल इन द UGC approved journal and quick publication journal. Now we will talk about the publication charges. So there is no publication charge. आप अपना research paper manuscript free of cost publish कर सकते हैं. So you can see here this is there are the no charge, no publication fees. So this is a very important thing, and ethical guideline we have to follow. So just read out it carefully, download, and if your research paper are ready, so then you can submit like this. This is the submission link. So just click on this submission link. So it will be redirected to the submission page. वहाँ पर आपको अपना login ID create करना पड़ेगा. Then you have to submit your research paper. But before submission, you have to ensure that your research paper and manuscript have prepared according to the author's guideline. So how we will see the author's guidelines? So you will see here all the author's guidelines. In the right hand side panel you can see there are the so many information are given. So like the view sample articles, so आप अपना व्यू आर्टिकल्स देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं. यहाँ पर ऑथर गाइडलाइंस भी हैं कि कैसे हम अपना रिसर्च पेपर प्रिपेयर करेंगे. और आप यहाँ टॉप मोस्ट पर भी देख सकते हैं फॉर ऑथर्स. तो यहाँ पर भी आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी. सो लेट्स बी क्लिक ऑन द ऑथर्स गाइडलाइन. So it will be redirected to the author's guidelines. All the things are available here. So prepare an article. So these are the author guidelines. So just click on this. So you will have the guidelines provided by the Indus Science publisher to publish your research in this particular journal. So this is the very important thing. Being a researcher, हम जब अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक रहता है, चैलेंज रहता है कि हमारा रिसर्च पेपर जो हम सबमिट कर रहे हैं उसका हमें एक्सेप्टेंस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है. वी आर कीन अबाउट द पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस. बट कहीं ना कहीं हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं, लाइक वी आर नॉट फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस. सो इंश्योर एट योर लेवल दैट यू आर फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस. सो दैट इज़ द चांसेज ऑफ योर एक्सेप्टेंस. तो आपका रिसर्च पेपर के एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं
और आपका रिसर्च पेपर क्विकली एक्सेप्ट होकर आपको नो इंटीमेशन मिल जाता है, और देन यू कैन पब्लिश योर रिसर्च पेपर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडेक्सिंग. सो यू कैन सी हियर दिस इज द SCI indexing Clarivate analysis. So in the last video we have already discussed, and always we focus the quality index journal like the Scopus index journal, SCI index journal and UGC approved journal. So this is the SCI index journal and also the DBLP journal and many more indexing. And one more important thing, this is the UGC approved journal, UGC care listed journal by 2020. More on this journal, so you can see here about the objective of this journal, readership, कौन कौन इसके readers हो सकते हैं. तो being engineer, being academician, researcher, we can also publish our research paper. research paper की जो इसमें categories रहेंगी वो review paper, research paper, short communication article. So just you have to go through about the description of part of the this journal contents, you can see here. And if you want to explore more about the published article in this journal, then just click on the browse issue. So issue is nothing but already published article, so then you can browse and also download and also can see. So this is all about the InterScience Publishers and Multidisciplinary Journal. So next category in this journal also again interdisciplinary, interscience and international journal of the financial engineering and risk management. This is also the multidisciplinary journal. So if you are a researcher and still searching multidisciplinary journal, so this is the best journal and UGC approved journal. This is the most important thing. About the publication timing, so these are the 4 issues per year, means your research paper will get published within 3 months. 3 months के अंदर आपका research paper publish हो जाएगा. This is the journal description, so you can read out it carefully. Now most important thing, what types of the topics and कौन कौन सी हम अपने रिसर्च टॉपिक अपने पब्लिश कर सकते हैं इस रेपुटेड जर्नल के अंदर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेट प्राइसिंग, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट. तो अगर आपका रिसर्च एरिया comes under this category, then you can publish your research area. Now this is the detail about the publication charges and also about the double blind review. And you can see there is no charges for the publication or research paper or article. So explore this journal at your level also. So you can submit your research paper for the quick publication UGC approved journal, and this is the submission link. So you can just submit your research paper. Now we will discuss about the indexing. So you can see here this is also the very good indexing, and this is also the listed under the category of the UGC approved journal. So this is also reputed journal. Authors guideline you will hear, so find out this here for authors. Friends, one more thing I want to share with you all. I have created a new channel, that is the name of the channel is the Researchers Adda. You will get the link in the description box. Just click on this particular link. So I have created a specially channel for the especially dedicated to the researchers only. So you will get only the research related video like on daily basis, regular 8 AM morning. तो 8 AM मॉर्निंग पर डेली बेसिस में आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छे जर्नल्स की इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से. तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो ज्वाइन विद दैट लिंक. सो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए. जैसे आपने यहाँ पर हमें प्यार दिया है, हमारा आपने मोटिवेशन किया, तो सिमिलरली वहाँ पर भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे रिसर्चर्स की क्वेरी थी कि प्लीज़ प्रोवाइड ए स्पेसिफिक और डेडिकेटेड चैनल फॉर द रिसर्चर्स. सो दैट्स वाई वी हैव क्रिएटेड ए रिसर्चर्स अड्डा. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए. नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे, क्योंकि हम वहाँ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं लाइक द यूजीसी नेट की इंफॉर्मेशन, हाउ टू प्रिपेयर अवर रिसर्च पेपर, एंड देयर आर द सो मैनी content and stuff regarding to the research related videos. So you will get the link in the description box. Now next category in the UGC approved journal, this is the Journal of Physics Communication. This is also the very reputed journal, and it comes under the category of the UGC care listed. Now most important thing, you will get the first decision within a 1 month. So 34 days के अंदर आपको अपने
रिसर्च पेपर और आर्टिकल जो आपने सबमिट किया, यू विल गेट द नोटिफिकेशन विद इन 34 वेदर इट इज accepted or rejected or something minor changes. So that is all about the physics communication. So if your research area comes under this category, then you can publish your research paper in this particular topics and title. There are the so many things we can explore in this particular journal site. Submit an article. If your research paper we have submitted, you are going to submit, so this is the link to submit your research paper. About the journal, if you want to explore more about the journal, तो आप इस पर क्लिक कर सकते, then click on this about the journal. And now you want to know about the editorial board members and editorial board team, so you can just click on now. Author guideline is very important. So whenever we are going to publish our research paper, so we have to follow the author guidelines like of a particular journal. So this is the author guidelines, so just click on the author guidelines, so you will have the guideline to prepare how to prepare our research paper for this journal. And review of this journal, publication charges, and each and everything are the given here. So explore each and every things. So now just click on the about the journal, so you will have the description about the journal. So what types of the scope, what types of the topics and titles covered by this journal, so you will have this type of the things. So Journal of Physics Communication published high quality research in all areas of physics and build on the strength of prestige. So like these type of the information are given us, so read out it carefully, so you will know about the detail of the scope of this particular journal article types, letter, research paper. अगर आप आर्टिकल या लेटर शॉर्ट कम्युनिकेशन अगर कोई पेपर सबमिट करने जा रहे हैं तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, हाउ मेनी वर्ड शुड बी देयर. सो 4500 वर्ड. रिसर्च पेपर अगर आप पब्लिश कर रहे हैं, टॉपिकल रिव्यूज कर रहे हैं, तो दीज आर ऑल द गाइडलाइंस आर गिवन हियर. सो यू कैन एक्सप्लोर ईच एंड एवरी detail in this particular section. So this is a very important thing. And if you are having any doubt and query, so this is the mail ID already given of that editorial board member. So just shoot a mail to the editor, so definitely they will revert back to you within 24 hours. And if you want to more about that publication charges, just click on this particular, and copyright, indexing, everything is given here. So you can see here, this is also the UGC approved journal and also the Scopus index journal and also the SCI index journal. So this is the very important thing to know. So if we are searching here UGC approved, but along with Scopus and Web of Science and also the UGC approved, so this is the kind of the very important journal to publish your research paper in this category. So I hope these type of the information definitely support to your research area. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, do like and do subscribe this channel if you are a new subscriber, and also help your friends by sharing this channel and this video. अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपना प्यार दिखाइए, मोटिवेशन, क्योंकि आपके सिर्फ एक लाइक से और एक आपके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है. तो शो योर लव टुवर्ड दिस पर्टिकुलर चैनल and for me like a motivation. So thank you friends for watching this video.